ओके, सो हम लाइव हैं अभी। और हेलो MS1s, हेलो, गुड इवनिंग संत, एंड हेलो एवरीवन। हाय रशीम। हाय हमजा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और लोगों के आने का। बहुत सारे लोग अभी नहीं आए हैं लाइव पे। साहिल हेलो, सुपर स्टाफ हेलो। हेलो दीप्ति। हाय ओम। हाय मोंटी। हेलो अभिषेक। हेलो सुरेश, हेलो सूरज, हेलो निर्मल, हेलो अभिजीत, हेलो चक्रवर्ती। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। सर फॉर हाउ मच टाइम विल दिस लाइव कंटिन्यू? देखिए, ये जो है ना, ये लाइव मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे चलेगी, क्योंकि देखिए टेब लाइव बहुत ईजी है, आपको सीख में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ इसी में। ओके, और जो आपको सीखना है थोड़ा एडवांस में, वो आपको मिल जाएंगे लिंक से। तो आप फिलहाल, वो बहुत ईजी है। हेलो मोहन, हेलो उतारी, हेलो अभिजीत, हेलो अबे, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो अभी हम पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या पहले आपको क्या करना है। कोर्स जब आपका शुरू होगा उससे पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। कैन स्पीक इन इंग्लिश या वी विल स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? लेट मी स्टार्ट अ पोल एयर, लाइक इंग्लिश और हिंदी, यू गाइस कैन चूज। व्हेन दिस कोर्स कैन यू कंप्लीट सर? इट विल स्टार्ट लाइक, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा था, कुछ नहीं है इसमें। बट चीज़ ये है कि ईजी है, बहुत ईजी है टू अप्लाई। इससे पहले हम लोग पावर BI पढ़ चुके थे, कितनी जल्दी ख़त्म हो गया था। वैसे ये भी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो एन ईजी। सो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वही है चीज़। हेलो अमल, हेलो 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 एवरीवन। सर इंग्लिश या आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू speak in both, because there are some students that are good in English and there are some students that are good in Hindi, so I'm trying to speak in both. So your voice are not loud. Okay, my voice is not loud. What are you saying? Voice is not loud. Hello hello hello. सर आवाज़ स्लो आ रहा है। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? अभी कैसा है? सर व्हाट इज़ अ प्रोसीडर फॉर अटेंडेंस? अभी आपको पता है, एक क्विज़ आएगा, ठीक है, क्विज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको क्विज़ को ऐसे सॉल्व करेंगे तो। साउंड अभी भी लो आ रहा है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? सबको साउंड लो आ रहा है कि कुछ लोगों को? इज इट गुड? हाय सर, स्पीक लाउडली। अच्छा, अभी भी अवधि में ही आ रहा है। ओके, मेरे पास एक आइडिया है, मैं पहले सुन लेता हूँ अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है।
Okay, so now it is good, maybe. Okay. What is the procedure? What is the process for getting certificate? So it is for certificate, you have to just pass some quiz. Okay, they will just send you the link of the quiz, and you have to just pass that quiz. Nothing else. And it will take just 2 to 3 minutes. You can, you will have unlimited life on that. You can like pass at any time, and how many try you can try again and again. Sir, what is your name? Okay, so let me first introduce myself. Okay, so I am Zan. This is my LinkedIn. दिस इज़ माई लिंक्डइन. आई एम जैन. और आपने काफ़ी लोगों ने शायद मेरे को पहले भी पढ़ाते हुए देखा होगा यहाँ पे. पावर बीआई जिसने देखा था, तो पावर बीआई में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं. 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं हम, एआई के साथ काम कर चुके हैं, और नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं. ठीक है. तो अभी क्या करना है, ये मेरी लिंक्डइन है, आप देख सकते हैं. PW एंड देयर ड्रॉपिक्स एंड दिस आर माई, जहाँ जहाँ मैं वर्क कर चुका हूँ. ठीक है. स्किल एक्ट पे भी. और बाकी आप पता है क्या करिएगा, जब आपको कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी आप जो भी सीख रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्रिएट अ पोस्ट करिए, और सिलेक्टेड को और मुझे एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि आप ये क्या सीख रहे हैं. इससे क्या होता है, इससे आपको एक्सपोजर मिलता है. क्योंकि काफ़ी फॉलोअर्स में से काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो लोग देखते हैं कि कौन बंदा कंसिस्टेंट रहा है. तो अगर आप कंसिस्टेंसी क्रिएट करके रखते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलेगा. तो ये चीज़ है आपके लिए. ओके, वेयर वी आर गोइंग टू गेट द लिंक फॉर द स्किल. You will get the link after this session, like at the end of the session. उसका वेट नहीं करना, उसका तो चिंता मत करनी है आपको, वो मिल जाएगी आपको आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन. ओके. सो तो अभी हम शुरू करते हैं. फिर देखिए पहले आप क्या होता है जब लाए. ठीक है. हाउ टू गेट अ सर्टिफिकेट सर. सर्टिफिकेट पाने के लिए बस आपको क्या करना है कि बस आपको एक क्विज मिलेगा, सॉल्व करिएगा उसको, उसकी अनलिमिटेड लाइफ होगी. आप जितनी बार भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट. इजी. ठीक है. जो चीज़ आज पढ़ाई जाएगी उसको ध्यान दीजिएगा, और फिर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा. इजी है, इतना ही से करना है आपको. ठीक है. इजी है. ऐसे आपको कर सकते हैं. हेलो दीपा, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश. या आई एम ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. I will try to speak in both of the language, because maybe few of them are good in Hindi and few are wanted to me speak in English. So start कीजिए. Okay, let me start. Okay, so just now we have to start. So पहला चीज़ हमारे पास ये आता है, ट्रैवल क्या होता है. ओके. सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ होती है. तो जब आप ट्रैवलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपने कितने लोगों ने ये पता है कि ट्रैवलर होता क्या है, कितने लोग को ये पता है, यस और नो में. कितने लोग को ये पता है कि ट्रैवलर होता क्या है. हेलो ग्रेस. विजुलाइजेशन टूल, यस. सही है. यशा, कौन था ये, यशाश्विनी. ओके, सही है. नो नो नो, यस 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 यस. आई डोंट नो. ओके, सो जिसको नहीं पता है और जिसको पता है, दोनों के लिए अच्छा है, दोनों को हम लोग समझते हुए चलेंगे. ठीक है. इसलिए मैं बस देख रहा हूँ कि अभी किसको पता है किसको नहीं पता है. ठीक है. ताकि दोनों को लेके चले एक साथ, और दोनों को साथ ही कोलैब करे तो चले. ठीक है. जिसको पता है उसके लिए भी अच्छा, जिसको नहीं पता वो भी देख सकता है. We will explain detail about Tableau or brief. I will explain in detail. Like we will just make a project after that, like a dashboard. No idea. Yes, data visualization tool. Yeah, data visualization tool. No, it is used for visualization data. Yes, a tool that helps you visualize and explore data by
turning complex information into easy to understand charts, graphs, and dashboards. Yeah, nope. Okay. Data analysis software tools like Power BI. Yeah, हाँ, पावर बीआई भी आपने पढ़ा था इससे पहले, और पावर बीआई भी यही काम करता था, सही चीज़ है अमर। This use English. Yeah, we are using English also. Tableau is a visual analytic platform that empowers users to analyze. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे सबको मोस्टली पता है और कुछ लोग को नहीं पता, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. We will start from the zero, so everyone will know what is a Tableau. Like it's a easy tool. Okay, so let me first hide myself so you can see you can see full of the screen. Okay. Okay, so now you can see full screen. So let us first start from the Tableau. Okay, Tableau is a software LLC in American Interactive Data Visualization. Okay, so it is a software. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा विजुलाइजेशन का काम करता है, डेटा विजुलाइजेशन का काम करता है. सो इट मीन्स वी कैन विजुलाइज द डेटा यूजिंग Tableau. Okay, so it can be help in business intelligence. इसके ज़रिए से हम किस में हेल्प ले सकते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस में. बिजनेस में हमारी हेल्प हो जाएगी. कैसे? बहुत सारी चीज़ों से. देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे कि कोई आपसे कह रहा है कि डेटा विजुलाइजेशन के लिए काम आता है, ठीक है, ये तो उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं. ठीक है, तो टैबलाई जो है और डेटा विजुलाइजेशन के काम आता है. और डेटा विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि आप डेटा को देख सकते हैं. ठीक है, डेटा को आप देख सकते हैं, डेटा को आप देख सकते हैं. सपोज करिए कि आप एक चीज़ देखते होंगे, आपने कभी ट्रेडिंग की होगी. ठीक है, काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग यहाँ पे की होगी, काफ़ी लोगों ने नहीं की होगी ट्रेडिंग. तो जिसने ट्रेडिंग की होगी या फिर नहीं भी की होगी, तो मोस्टली लोगों ने देखा होगा ट्रेडिंग में कुछ कैंडल पैटर्न्स होते हैं. कैंडल चार्ट से कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो ऐसे उसकी टिक होती है, इसके नीचे ऐसे होता है ना, तो ऐसे कुछ होते हैं. ठीक है, कैंडल चार्ट, इनको रीड करना बहुत इजी होता है. बट अगर यही चीज़ यहाँ पे कैंडल चार्ट ना बना होता, सिर्फ प्राइस लिखा होता कि अभी 206 प्राइस है, फिर नेक्स्ट लिखा होता 2.06 है, इसके बाद नेक्स्ट लिखा होता 2.08 है, फिर नेक्स्ट लिखा होता 2.05 है, तो ये पढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है. और डेटा को अगर विजुलाइज करा दिया जाए इस तरीके से, तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा चीज़ों को देखना. कई बिजनेसेस में भी बहुत हेल्पफुल होती है. जैसे सपोज करिए कि सेल्स है. ठीक है, किसी ने कहा कि पहले मंथ उसकी सेल हुई है 2,000 की, दूसरे मंथ उसकी सेल हुई है 3,000 की, तीसरे मंथ उसकी सेल हुई है सिर्फ 1,500 की, चौथे मंथ उसकी सेल हुई है 5,000 की. ठीक है, और पाँचवें मंथ उसकी सेल हुई 10,000 की. अगर ऐसा कुछ लिखा है, तो अब अगर हम डेटा बनाएं यहाँ पे, ठीक है, तो हम बनाएंगे. देखिए यहाँ पे 2,000, 3,000 ऊपर गया, ठीक है, 1,500 नीचे गया, ऐसे बनाएंगे. फिर 5,000 बहुत ऊपर गया और 10,000 बहुत ऊपर गया. इस तरीके से देखिए पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे ऊपर गया था थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे आई नेक्स्ट मंथ में सेल, फिर इसके नेक्स्ट मंथ में बहुत ऊपर गई सेल, फिर उसके बाद तो बहुत ऊपर गई सेल. तो ये पता चल रहा है हमें सेल देख के. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है ना, डेटा को विजुलाइज करके हो रहा है. अब जब भी डेटा को विजुलाइजेशन होगा, डेटा का विजुलाइजेशन के समय हमारा काम ईजी हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, विजुलाइज करके कोई चीज़ देख के हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि उसमें हो क्या रहा है. तो सिंपल सी बात है, कभी भी आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हो क्या रहा है, ईजी है ना. ऐसे अगर आपके पास ये डेटा लिखा होता है, पहले मंथ में 2,000 हो रही, दूसरे मंथ में 3,000 हो रही, तो अगर इसमें बहुत सारे मंथ होते हैं, बहुत सारे साल होते हैं, तो आप क्या देखते हैं? फिर आप ढूंढते हैं कि सबसे छोटी सेल कब हो रही है. तो आप ढूंढ रहे होते हैं कि सबसे कम सेल किसी साल में जाके इस महीने में हुई थी ना. तो ये तो बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी. आप एक एक करके शीट निकाल लें, फिर ढूंढ रहे हैं. वही अगर मेरे पास कोई चार्ट बना है, देखिए आप खुद ही बता सकते हैं कि इस चार्ट में सबसे ज़्यादा सेल कम कहाँ हुई थी. देखिए कोई बहुत सारा सेल है का डेटा बना है यहाँ पे, तो देखिए सबसे कम सेल कहाँ हुई, यहाँ पे हुई होगी. तो डेटा को विजुलाइज करके बताना इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को. ठीक है, जैसे मैंने ट्रेडिंग का एग्जांपल बताया, ट्रेडिंग में कैंडल पैटर्न्स बने होते हैं, जो कि हमें पता चल जाता है कि कैंडल से जरिए हम बहुत सारे प्रोडिक्शन कर सकते हैं ट्रेडिंग के डेटा के ना. तो यहाँ पे डेटा विजुलाइजेशन की काम आता है टेबल, जो कि बिजनेस में यूज़ होता है. और डेटा एनालिस्ट अगर आपको बनना है, तो ये टूल अगर आप सीख लेंगे ना, तो ये खुद में ये टूल एकदम बड़ा है.
इसकी खुद की हायरिंग होती है सिर्फ इसी टूल को जिसको आता है। सोच लीजिए कितना बड़ा है। कोई अदर स्किल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कई बार, सिर्फ वो लोग कहते हैं कि मुझे टेबलाई वाला बंदा ही चाहिए, तो कितना बड़ा टूल है खुद में ही। ठीक है, तो आपको जब ये सीख रहे हो ना, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर लर्निंग दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जो है ना इसके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यू हैव टू ऑल्सो मेक अ प्रोजेक्ट, सम प्रोजेक्ट्स फॉर दैट, बिकॉज whenever you are using Tableau and or you are learning Power BI, you have to always make projects on it. Okay, because projects are very important these days, and mostly companies also uh, check like the project. Okay, so whatever you will show in your LinkedIn and whatever you will show in your CV, they you have to mention the projects, whatever your projects you have made. Okay, so that's why we are learning data visualization using Tableau by a project, okay, by a dashboard. And that dashboard is nothing like a Netflix dashboard. It is something a big company, so we will work on that dashboard, that type of data. Okay, data sets. Please speak in English. Are you speaking in Hindi? Since I'm not understanding, I'm speaking both, bro. Hello, hello, I'm speaking both. Okay, what is Tableau used for? So Tableau is most known for its wide range of data visualization capability. So we have already read this before, that data visualization is done by Tableau. Okay, so this is also a BI tool. What is a BI tools? If anyone will ask you what BI tools, so what is a BI tool? Okay, yes, this is right. BI tool is a business intelligence tools. Okay, so this tool is used for business intelligence, like a intelligent tool for the business, because we gain the profit by using these tools. We can work fast by using these tools. Okay, we can analyze our data, we can analyze our sales by using these tools. So the tools like Power BI and the tools like Tableau will help us to make our business more efficient, more intelligent. That's how we can say about Tableau. Analysts used to examine data with a SQL and build data solution for business decision maker who is turned used to the analyze data without having to code. Okay, so एक चीज़ बताता हूँ मैं, कि जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि Tableau, अगर आपने इसको सीख लिया अच्छे से, अगर आपने इसको सीख लिया अच्छे से, तो इसका मतलब है कि आपको फिर यहाँ पे कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना कोई प्रायर नॉलेज के कोड के आप एक अच्छे टेक फील्ड में जा सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये वर्ड मैं दे सकता हूँ कि Tableau को सीखने से आप बिना कोई प्रायर कोई नॉलेज के बिना, कोई कोडिंग की नॉलेज के बिना आप जा सकते हैं एक अच्छे से डेटा एनालिस्ट की फील्ड में। ओके, बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में। या देयर विल बी एडवांटेज इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन ऑलवेज, but if you didn't know how to code, then these tools will make you go to the journey of IT fields. Okay, so these tools are very important for you guys, you have to understand that. Okay, anyone asked, can I learn Tableau in 2 days? Yes, of course, you can learn in 1 hour also. Tableau is very easy tool, you can learn it at any time and like in easy way. Okay, so we have already know what is Tableau, and let me also write Tableau real world uses. I already told you about the real world uses, but let me show you more real world uses. Okay, sales performance. So if you want to see the sales performance of your company, you can use Tableau. Okay,
That's how we can say. And financial analysis, if you are using, if you are working on a finance in finance businesses, then you can use these tools. Like if you are also a bcom, if you are also did a bcom or a bcom student, this is very important tool for you guys, like very very important tool. Okay, marketing analyst, you can also become a market analyst using these tool. You can get know about the where is the traffic is coming, what was wrong with the traffic, and what is the age group your product was watching by. That type of things you can watch by using marketing analyst. Supply chain management, you can check like what inventory you have and what inventory is sold by you. These type of things you can check by using these tools easily. Human resources are those like track performance monitors. This you can also use these types of tools for that time. In health industry you can use like what is a health what is the next analysis you can predict. Okay, like अभी भी रिसेंट में कोविड आया था, तो कोविड में लोग क्या कहते थे कि कितने लोग को कोविड हुआ तो बार होता था, कितने लोग रिकवर होते थे उसका बार होता था। सिर्फ डेटा निकालने के लिए कुछ तो बार बनाए जाते हैं ना, इसलिए भी हम यूज़ करते हैं टूल्स को। टोटल निकालने के लिए भी, एवरेज निकालने के लिए, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दिस टाइप ऑफ टूल्स यूजिंग बाय दिस इंडस्ट्रीज। Okay, retails. In retail shop, if you want to track your inventory, if you want to check what is the maximum sale thing, and these type of data you can check using these type of BI tools. Manufacturing, in manufacturing company, like you want to track the machine performance and optimize efficiency, so you can use these type of tools. Okay, in finance I already told you about that, like stock market and the shops. Okay, government also use these type of tools for checking the crime data, for checking the social program, for checking the public health, for checking the surveys. These type of tools are used basically. Okay, so these are some example. These are a few examples you may have to know about. Okay, let me show you something like social blade. Are you are you aware of social blade? कभी किसी ने social blade देखा है इससे पहले? Develop mode. You asked me about data analyst. But I am requesting to complete before. Uh, okay. Data analysts are the people who analyze the data. Okay, and data scientist is something big. Like they are like a, if they are bucket, then data analyst is just a flower, you can say. Okay, so you can see this is social blade. If you go to the top 50 creators, and then we can check any of the creator like Disney Kids. Okay, you can see there is some views and videos, how many videos they have posted. Okay, and there is also a chart. So these all things are done by also a dashboard. Okay, this is a prime example of how a dashboard works in uh, Tableau and Power BI. So they shows like view for the last 30 days is 5 billion. So do you think that they always just type these, like change these datas? No, they didn't. जो भी इनको डेटा मिलता है वो ये कैलकुलेट होके खुद से आता है. Okay, or how they calculated this, like these type of views they calculated it, and it is coming from the API. किसी एक API से आ रहा है डेटा, ठीक है, और उस API से ये व्यूज़ देख रहे हैं, व्यूज़ से ये भी निकाल सकते हैं. So they can do many things by using these type of tools. Okay, so that's all about the about the theory knowledge. Now let's we go to the practical knowledge. Okay,
So I'm going to like open Tableau. Okay, public. So you have to open the Tableau public. Okay, so for downloading the Tableau, you have to click the Tableau public and you will discover this app. Okay, and you can download it from here. Okay, so I have already written the notes, like you can just search, you have to just search Tableau public and download it from the Tableau public. Okay, after downloading you have to just install it, like next in simple installation, like usually do. जैसे आप हमेशा इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ये भी इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं इंस्टॉलेशन की। नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वही जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई टैबलाई पब्लिक से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करना बहुत ईजी है, आपको डाउनलोड करके मेरे ख्याल से रखना चाहिए था अगर आप ये चीज़ को सीखने आए हैं, ठीक है, पहले से ही। Now we have to talk about the interface of this tool, Tableau. Where is Tableau? This is the app of Tableau. So I'm going to open this and you can see it here. Let me just open it. Okay. So this is a Tableau tool. It will look like that whenever you will open it. Okay. तो ये ऐसा कुछ दिखेगा जब आप इसको ओपन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा डेटा। डेटा जो हो सकता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। डेटा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा हो सकता है, या एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या एक जेसन फाइल भी हो सकती है। जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का नोटेशन होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट अगर आपको पता है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी कुछ फाइल्स होती हैं जो कि डेटा को स्टोर करके रखी जाती हैं, उसमें भी यूज़ हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपको पता होगा कि एक फ़ाइल होती है, इसकी भी बनाई। पीडीएफ फाइल भी हो सकती हैं, स्पेशल फाइल्स भी हो सकती हैं, और स्टैटिस्टिकल फाइल भी हो सकती हैं। सो एनी ऑफ दिस टाइप ऑफ फाइल कैन बी पॉसिबल। ओके, so for we have to connect the data, we have to connect the tabli by these type of datas. Like I will go to the file, you can see it here. I will go to the file, then I will click on open, and now I have to open any of the data. Okay, so where is my data? My data is like this: Netflix titles or titles. Okay, so this is my data: Netflix titles dot csv. This is a csv file. Okay, so maybe you guys also wanted this file, so let me first give you all. Let me first open the tribe and upload it and then send to all of you. File upload, so you can work with me. Yeah, this is the file we are working with, .csv file. This is official made by .csv file by Netflix. And let me share it. Then I have to just copy the link for everyone. Okay, this is a data set. Okay, this is a data set. And now let me just come to the screen. So you can see it here. I had already created Netflix dashboard using this data set. Okay, I will tell you how you can create it the same, but I will just create few of them, like this one and then this one. Okay, I will just create how much time we have left. I will just take that much time, and after that I know
you will learn that much that you can complete it by it yourself. I know it. Okay, because this tool is very very easy tool. Okay, you can use it easily. तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। हम अपने डेटा पे आते हैं। So that's how our data looks like. So our data have something that is type, that is title. Okay, and type is ABC. Like type is, you can see the type is string. What is a string? String means alphabet. Any alphabet, any letters, any word you can store in string. Okay, so any sentences also. So this is all string. A B C D, these type of things are character wise thing, word wise thing, and sentence, these all things are a string. So you can see type is string type. Okay, and show ID is hash. Hash means number. So this is a primary number. Okay, and title is also a string, because title will also be the word. Okay, that's why. And director name is also a string. And you can see the cast name is also string. Okay, so that's how the data will look. And you can see it here, the country is not a string. The country is, you can see, geographical. This is a geographical data. That's why it's look like this and they shows like this. And date added is also a string, but the date added should be a date type. Okay, but this we mentioned the string types because I have to show you that how you can convert. That's why I choose this one. Release year also a number, and rating is a string, and this is all the data. Okay, that's how our data looks like. तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी. Okay, you can check it here also, the fields, the data's field on the first rows, it shows in this. Okay, a simple thing, nothing hard. तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? Okay, I have to provide you quiz ना. Wait, let me provide you guys quiz. I think I have to first block the vision. Where is the display? Okay, I have to remove, because I'm going to open my WhatsApp, that's why I'm doing this. Okay, so I'm going to send you guys the quiz also. Okay, so this is a quiz link. Okay, you can also use this, and after this you will get a certificate. Let me remove the poll. Okay, so you got the stuff here, you got the link by which you can just get the certificate. Okay, for those who came here for the knowledge, let us start again with the knowledge. Okay, so this data looks like. Now I have to go to the sheet 1. Now I have to go to the sheet 1. I just click on sheet 1, and I have to renew this sheet to the name, like this is our Netflix 1. Okay, so I just rename this sheet name by double clicking on that part. Okay, now you can see it here, you can see there is Netflix 1 written in this. Okay, so what we have to do next, we already completed the 5th step.
Now we have already completed this field name, and now I have to just click on the sheet. I have already clicked on the sheet, and now I have to different field we have to here. Okay, so you can see it. You can see also in our data set there is different field here in this cast. We have cast, we have country, we have data added, we have show id, we have listed in, we have duration. So there are many multiple files inside. Okay, and now next what I have to do, I have to just show you why. Let me show you. So this is latitude and this is longitude, and why it is generated by itself. So you can see it here, the country, whenever I will click on the drop down, you can see the geographical role. You can see it here, the geographical role is a country region. So because it's a country or region, that's why they give us longitude and latitude. That's the reason they gave us longitude and latitude. Okay, and you can see we have geographical stuff there in a country region, that's why longitude मैंने बता दिया आपको. Now we will just drag and drop year and show id. How we can do it? Okay, so let me go to the Tableau, and I have to just go to the date added here on the column side, and I will add all member. Okay, so you can see it here, like all the members, like April 1, April 2, every members has been added, but we want data added should be the year only. So we will just paste it inside the filter. Okay, after filtering it, we will just make it as data added. We have to make it as all members. We have to make it just like year. Okay, that's what I have to do. Just that's what I have to do only. Okay, so filter, and I don't know why this is not okay. Now it's okay. uh okay, now you can see it's been, it's the, you can see the selected thing is this all, but I want to I want this should be a year. Okay, that's what all I want. So if I will just whatever I will select, I can select it here from here, select from the list, and then I will select it. Okay, I can also exclude it, whatever I don't want to select, and whatever I want to remove, just I will click on that part. I can remove it easily. Also I can also write like from where we have to start and from where we have to end. This type of thing is also there. Okay, so that's how we can make that's how we can filter the data. We can filter it by ourselves easily. Okay, and one more thing, when we click on the automatic button, we also can see there is a multiple graphs, like a line graph, area graph. Okay, and on in the row side, let me just paste what I have write. Let me just paste show id. Okay, let me just paste show id. Where is the data? Okay, so I have to paste the show id, all numbers. So that's how it looks, but the problem is the let me show the problem.
date added is just an string. We have to make the date added as a date and time. So I have to just go to the I have to just go it's this part and drop down menu, and I have to just convert it into date and time. Okay, now it will work like date and time. And what I will do, I have to delete now date and time, and then when I will paste date and time right now, you can see it here, it says year. Now it is here. That's how we converted the simple string type to the date type, and we also filtered it to the year. If you don't want to filter it from year, then you can go to the filter and you can select you want the year, you want to quarter, you want the month, you want the days. So you can select it from the here, and whatever you will select, just select it and then next, and you can select which years you want. That like I want all the years but not null, so I will just apply it and then okay. Okay, that's how it's all work. And now just have to paste it. That's how this all works. Okay, easy. I think it's very simple for you guys. Okay, you can see it here, the null has been gone from that part. Okay, now we have to do, we have to make a line graph, we have to make a area graph. You can make any graph, okay, using these things, but for this right now we have to make just automatic way. And for the show id, I will make a bar, and I can make a area, anything I can make. Okay, now we have to remove the filter part from there, and now you can see it here. This is how our data now looks like, but we want a area chart here. We want a area chart here like this one. You can see it here. This is our area chart. Okay, so what we will do, let me show you. Okay, so what we will do, we will make a area chart like this by selecting it from the area. You can see it here. Okay, for this I have to just show the area, show me, and then what I have to do, show id, and then I have to select area. I think they didn't select the show id. Where is my this part, show id? Okay, the problem is right now, there is many distinct values. Okay, and the issue is Tableau automatically work many things. Okay, so we have to remove the show id distinct values. Like the repeated value we have to remove. अगर मुझे पास कोई repeated value तो उसको remove करना है, तो मुझे count distinct पर करना पड़ेगा. अब देखिए सही है, क्योंकि डेटा जो हमारे पास है वो जैसा भी हो हमें खुद से फिक्स करना है. सो टैबलाई खुद से ऑटोमेटिकली चीज़ों को हमें प्रोवाइड कर देगा. जैसे कि अब इसने इतने सारे चार्ट खोल दिए. Now you can make any of the chart, but we are going to make the area chart, so that's why we can go for the area chart from here. This is our area chart right now, and we can color it anything, like we can color it red also. Why we colored it red? Because we want to make Netflix dashboard, that's why. Now what if I want to remove anything? Whatever you want to do, just you can do it here now. Just right click on it, and then forecast, drop lines, there is many things you can do it. Okay, what if you want to remove the distinct count of show id? So you have to just press double click, and then you have to just remove this part, and then go back, and you can see it also not there.
If you want to change the background like a black, okay, then you can go to format, right click, format, and you can see it here. We can change many things. The third part is for the color. We have a worksheet as a white color, but we have to make the black color. Now there is a grid lines we have to remove, so we can go to the trick grid, and we can see that this is a row grid, so we have to make it none. For the columns there is nothing, so we are not going to change anything. And what if you want to change the color? You can go it. We are here. When we are here, we can change the worksheet color also. Okay, like if you want to change the color, you can change it also. This is a red area. Okay, you can make the header color also different, like this is a header color out now. And now you can just change the date added to anything. Okay, so that's how are these type of data works like. I think it's easy for anyone to understand these concepts, because these are nothing like these are nothing, बहुत easy है ना. अगर हमारे पास ये है फील्ड लेबल्स हैं, फील्ड लेबल में हमें दे रखा है टैबलाई और अदर अदर चीज़ें स्टफ्स. हम यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट आता है हमारे पास. फॉर्मेट करने के बाद हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. So that's how it works. Easy, I think. You can change the name from here also, like we want to make it white and we want to change it from net to Netflix dashboard. Netflix dashboard, and we want to make it red. Select it all and then make it red. Apply and then okay, but we have to align it center. Apply, we have to align it center. Okay, that's good. Okay, that's how it works. You can add more datas here, like you added just date added and show id. You can add more datas. What if I want to go to the show id with titles, with type? So you can see it here. There is also a type, and type color should be anything else, like it should be light and type. So this is a type and this is our show. That's how these all things works. Easy. Okay, so easy. Now what we have to do, we have to create a new sheet. So we are going to create a new sheet here. From here we can create a new sheet, and now you can add, you can make anything you want to make, like I already showed you this one. Just click the screenshot of that and try to copy it. Now I have to and let you understand that how I have made this all for you guys. Like you can see it here. You can see this is a movie TV shown by map. Okay, so for the map we have to paste longitude on the column and latitude on the on this side, row side, and we have to paste
the marks of show IDs and country. So it will work with latitude and longitude as a dashboard, but it will count the value of show ID and country. Okay, and next we can also print top 10 genre. Okay, so for that, this is a very simple thing. We have uses show ID and then listed in, and in show ID we have used this paragraph. Easy, simple task. Sir, can we add this project in resume? Yes, you can add this project in resume. After that, I haven't attend the quiz and I get. Yes, you will get it. How did you got it? I already sent you the link of the quiz. You can just click on that and you can get the certificate by everyone. Please, you can all guys can add it in your resume, and you can also add it in your LinkedIn. So because that's how it works. Okay, now the homework time is the simple thing. You already learned about a lot of things in Tableau, and now just you have to use your brain and then use your like designer mindset and design custom thing. But for your reference, I will give you this project which I had already made for you guys. Okay, so let me send you this one, so you can just try to copy paste first and then you can make by yourself. Okay, if you didn't, but you have to try. पहले अपना खुद से ट्राई करिए, फिर से उसके बाद इसको देखिए, ये सबसे तरीका। ओके, सो मैं इसका आपको लिंक दे देता हूँ, सेम आपको बनाना है। ये आपका टास्क है। शेयर किया मैंने। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। ओके, सो यू गाइस कैन व्यू इट। For those who didn't get the certificate, you can let me send you the link again. Go there, go this site. You have to go visit to this site and then you will get the certificate. Sir, can you tell me for any important certificate scenarios to improve or boost up in resume? You have to just prepare for some steps like Power BI, Tableau. Okay, or then you can prepare for Python. These are some stuffs you have to learn. Also, you have to make projects. Anyone have any doubt, you can ask. Please keep asking so we can leave after that. If anyone want to ask anything, what how it is make, like I am saying that this is very easy things. I also as a data scientist, I never learned these tools like Power BI and Tableau. I just practice it on making projects, so that's why I know that you guys can do. How to open Netflix or a file, which app supports? You have to open it using Tableau. Okay, Tableau यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। any like uh, any like internship like better company suggest any internship, you can go for any internship like what we have to say, anything like check in your LinkedIn whatever the companies, if it is a startup then you can also go for that, because you are talking about the internship, then you can go to any company whatever shown in your LinkedIn.
whatever shown, और they will ask you to join. सर सर्टिफिकेट में बताया तो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? ऊपर पिन है सर्टिफिकेट का लिंक, कोई सॉल्व कर लो बस. Are you going to do Power BI streaming also? I already did Power BI streaming before, but if you guys didn't have Power BI tools like I had taught before, let me try to search about that live. If I found it, then I will send you guys live Power BI. This was like Netflix dashboard, Master Power BI by studying Netflix dashboard. I think it is one. Okay, you can check it here. Are you going to do sir, I am not be able to log in your website. Why? Nowadays better to choose to go or not. Nowadays it's better choice to go or not, sir. Data. I think it's better choice for now also, because I think data scientist and data analyst are these type of things that nobody can, not AI can replace for like 3 4 5 years. You can go to the data analyst and you can keep learning to the data scientist. Okay, first grab the job toward the data analyst, then keep learning toward the data scientist, because data scientist is not going anywhere. Can you show the installation process of Tableau and Power BI? Yes, I can show, but इसमें कुछ नहीं है, बस easy install install next 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 करना है. ये हमारे पास Tableau का लिंक है. कहाँ गया Tableau पब्लिक? ये रहा. ओके, Tableau पब्लिक डाउनलोड लिख दीजिए, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए. ये देखिए डाउनलोड डेस्कटॉप लिखा है, यहाँ पे आप आए. जैसे you have to just write your name, first name, last name, email or phone number, and download free trial. We can do it like here. Download Tableau desktop just like this. Okay, and after that just next 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 install. Difference between public and professional edition. Okay, there is a difference between public and professional edition. Professional edition is a tool that used by a professional business analyst, data analyst. So there are many features that is not included in public, but public is because free of cost right now, so that's why I prefer you guys to use public. ओके, सो यहीं पे एंड करते हैं. ओके, लिंक्डइन में कोशिश करिएगा आप लोग सब पोस्ट कर दीजिएगा एक बार. ठीक है, कि आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एट द एंड जॉब चाहिए होगी या फिर कुछ भी चाहिए होगा, उसका एक नेटवर्किंग क्रिएट होती है. नेटवर्क बना के रखिए. अगर आज 528 लोग देख रहे हो, सारे 528 अगर एक बार जाके एक दूसरे को भी कनेक्ट कर लेना, बस इतना भरोसा रखें कि एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास 532 नेटवर्क्स बन जाएंगे, जिसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्किंग. क्योंकि आप जिस फील्ड में ना, यहाँ पे रेफरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, यहाँ पे एचआर की आपको नीड होती है, कि आपको एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. बस ऐसे देख के इजी लगता है, कहीं पे आपने ऐड देख लिया कि उन्होंने लिख दिया कि यू आर गेटिंग जॉब, बट ऐसा इतना इजी नहीं है. कई कई बार आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है. तो इतना इजी नहीं है ये टेक फील्ड. बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं अपना टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, तो आपका बेनिफिट होता है.
I had downloaded the professional edition trial version. How can I switch over to public? No, you can't switch. Just uninstall it and download the public version. ओके सो कोई किसी को कुछ डाउट होता है यू कैन आस्क, और उसके बाद हम लोग इसको एंड करते जल्दी. Certificate, I already sent you the certificate link. This is a pinned comment. Yeah, you can see. I can send you again. Also, you can see it here. I had sent it again to you. Okay, you can check it here. Just click on this link and then just I think there is a quiz. Yeah, buy now for free, and then there will be the quiz, and you will get the certificate by quiz. Just this. How can I get the certificate? If anyone knows, please tell me. Yes, just this link. As a fresher, how much package will expect? As a fresher, I think it depends on the company and your skill. So आई थिंक मैं इतना इतना डिटेल में नहीं बता सकता ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है. कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आप क्या है, आपने किस कॉलेज से किया है, और आप क्या स्किल लेके आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और क्या आप कितने साल से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है कि नहीं. फ्रेशर हैं तो आपने आप जो फ्रेशर हैं, आपके टूल टूल के बारे में कितनी नॉलेज है, क्या आप उसके ब्रीफ में जानते हैं. बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है. तो बहुत सारे फैक्टर्स, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है अभी. बट स्टार्ट के लिए आप कहीं से भी, मतलब थोड़ा बहुत भी कोई अगर पे कर रहा है आपको, तो आप कर सकते हैं स्टार्ट. क्योंकि आपका एंड गोल बताएं, कभी भी डेटा एनालिस्ट नहीं होना चाहिए. आपका एंड गोल हमेशा डेटा साइंटिस्ट की तरफ होना चाहिए. ये समझ लीजिए, ठीक है. डेटा एनालिस्ट भी बहुत सारे लोग का एंड गोल होता है, लेकिन क्या फ़ायदा. तो अब एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है. और फिर हम लोग मिलते हैं. इसके बाद आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई लिंक्डइन. मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिएगा, मैं वहीं पे मिल जाऊंगा आपको, ठीक है. कोई भी डाउट होगा तो. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.